Can you see my screen now? Yes, ma'am. Okay. Now? So my screen was visible now with slides? Okay, okay. Okay. So common women health issues. ठीक है इसमें I have taken 3 topics: osteoporosis, low back pain, and anemia in pregnancy. So first we will start with osteoporosis. Osteoporosis is a problem in which bones are less dense and more fragile, and thus at a greater risk of fracture. Even with a small amount of trauma, this disease often affects bone in the hip, spine, and wrist. As you can see, that with small amount of trauma, they can cause fracture. Then low bone mass and microarchitectural disruption causing weakening of bone, which predisposes to fractures. And then osteoporosis causes bones to be more fragile but rarely cause pain unless you actually break a bone. आपको ऐसे कोई पेन नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कि आपकी जो बोन है वो ऑस्टियोपोरोटिक हो चुकी है. ठीक है. सो दिस इज अ साइलेंट डिजीज. तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, इसके अंदर ये पीक बोन मास है जो हम अटेन करते हैं. ठीक है. और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी देर तक हम इसको अटेन करके रखते हैं अप टू द एज ऑफ 35. उसके बाद फिर ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है बोन मास. देन पैथोजेनेसिस ऑफ ऑस्टियोप्रोटिक फ्रैक्चर, इसमें एजिंग है. सो एजिंग से इनएडिक्वेट पीक बोन मास, कि धीरे धीरे बोन मास जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. इट विल लीड टू लो बोन डेंसिटी एंड देन स्केलेटल फ्रेजिलिटी एंड अल्टीमेटली फ्रैक्चर. या फिर हाइपोगोनाडिज्म एंड मीनोपॉज, इसमें भी इंक्रीज बोन लॉस, इम्पेयर्ड बोन क्वालिटी एंड अल्टीमेटली फ्रैक्चर. देन क्लिनिकल रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से देर इज प्रोपेंसिटी टू फॉल, देन फॉल्स, एंड अगर बोन वीक है, एक्सेसिव बोन लोडिंग हो गई है, इट विल अगेन लीड टू फ्रैक्चर. ठीक है. Then this is the picture of a normal bone, and this is a picture of a osteoporotic bone. ठीक है. You can see the porosis in the bone. Bone में ना एक जैसे छेद बनने शुरू हो जाते हैं. ठीक है. And these things they make the bone fragile and easy to break. Then risk factors. In young healthy adults, bone continue to grow, reaching their greatest strength around ages 20 to 35. After that, bones slowly become weaker as you get older. The risk of osteoporosis increases with age. Osteoporosis is most common in women after menopause between the age of 45 to 55. Women have less bone mass than men and lose bone mass sooner and faster than men. After menopause, women produce much less of hormone estrogen. Estrogen helps women's bone to stay strong. For example, it helps to deposit calcium in the bones. Low level of estrogen cause a weakening of the bones. So osteoporosis is most common in white and Asian women, especially slender women. So body shape, but it can occur in women of any race. It can in any region, given ethnic group. Older women have about twice the risk of osteoporosis as compared to the older men. So you are also at a higher risk if you have a family history of osteoporosis. Okay. So causes of the osteoporosis: prior fracture as an adult, then current cigarette smoking, then low body weight, frailty, for example, not being able to rise from a chair without help, long term use of certain drugs like prednisone, heparin, then anti seizure drugs, then medical conditions that impair GI absorption either due to surgery or illness, such as Crohn's disease, then hyperparathyroidism, alcoholism, severe liver disease, kidney failure, too little calcium in the diet, अगर जो लोग कम कैल्शियम खाते हैं, not enough weight bearing exercise such as walking or lifting weights, क्योंकि जितना आप अच्छा एक्सरसाइज करोगे आपका जो पीक बोन मास है वो उतना अच्छा गेन होगा. ठीक है. टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है उतनी अच्छी हो जाएगी बोन की. Then intense exercises such as marathon running, which reduces estrogen level.
तो जो इंटेंस एक्सरसाइज है उससे एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो लो हो जाता है, तो वो रिवर्स तरीके से फिर अफेक्ट करता है आपकी बोन को. देन लॉन्ग पीरियड्स ऑफ बेड रेस्ट ड्यूरिंग सीरियस इलनेस विच स्पीड अप्स द लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स. देन ईटिंग डिसऑर्डर्स और टू मच डाइटिंग विच रिड्यूस एस्ट्रोजन लेवल. देन जैसे एच आई वी जो पॉजिटिव लोग हैं, उनमें बोन लॉस अकर्स फास्टर इन पीपल लिविंग विद एच आई वी देन द नॉर्मल पीपल. ठीक है. दीज आर द सम कॉमन रिस्क फैक्टर्स फॉर ऑस्टियोपोरोसिस. इसमें से नॉन मॉडिफाइबल हैं और मॉडिफाइबल हैं. नॉन मॉडिफाइबल एज यू नो, ओल्डर एज, फीमेल जेंडर, मेनोपॉज, फैमिली हिस्ट्री, स्मॉल फ्रेम और लो बॉडी वेट, हिस्ट्री ऑफ ब्रोकन बोन्स. ठीक है. और मॉडिफाइबल में लो लेवल्स ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी, रिड्यूस इंटेक ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, इंक्रीज्ड इंटेक ऑफ कैफीन, then sodium and protein, sedentary lifestyle, smoking, increased use of alcohol. Then bone density and peak bone mass. Bone density in later life depends in equal amounts on mass achieved in youth and on later rate of loss. ठीक है. मतलब इसका लाइन का मतलब ये है कि जितना अच्छा आपका अभी बोन जो पीक मास है, जितना अच्छा आपने अटेन करा होगा, लेटर लाइफ में आपकी बोन डेंसिटी उतनी ही अच्छी रहेगी. ठीक है. देन स्केलेटल मास इन द हाईएस्ट इन योर 30s एंड डिपेंड्स मेनली ऑन डाइट. डाइट में आपका कैल्शियम और विटामिन डी है, फिजिकल एक्टिविटी है, प्लस जेनेटिक्स. कुछ लोगों की जेनेटिकली बोन्स जो होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं. Although all have a gradual decline in bone density after middle age, most women during the first few years after menopause may have a faster rate of bone loss. ठीक है. ये पीक बोन मास जो आप अटेन करते हो और उसके बाद फिर स्लोली विद एज जो है वो बोन मास जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है. ठीक है. दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ अ बोन. जैसे एडोलेसेंट गर्ल्स में फिर पीक बोन मास अटेन होता है, यंग वुमेन में वो स्टे करता है. ठीक है. उसके बाद देन इट अगेन कम्स डाउन आफ्टर मीनोपॉज. पेरीमीनोपॉज फेज में भी पीक बोन मास जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है. Then clinical features. Patients may have no symptoms until the bone breaks. Broken bones are the most common problem for people with osteoporosis. Often it is in hip, arm and wrist. Then all bones can be affected by osteoporosis, but the worst osteoporotic fractures occur in the vertebrae of spine and hip. Vertebral fractures can cause back pain, loss of height, curved spine and stooped posture. Many vertebral fractures do not, however, cause any pain. A hip fracture almost always requires a hospitalization and surgery. Then osteoporosis and aging. ये आपने देखा यंग विमेन का पोस्चर और उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस में फिर एल्डरली विमेन में कैसा पोस्चर हो जाता है. सो इन्वेस्टिगेशन इसमें जो आजकल सबसे अच्छा और बेस्ट स्कैन जो माना जाता है, दैट इज योर डेक्सा स्कैन. सो डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री. Two photons are emitted from an X-ray tube, gives very precise measurement at clinically important sites with minimal radiation. Measures bone mineral density, approximation of bone mass, and best predictor of fracture risk. तो कुछ पॉइंट्स होते हैं बॉडी के सिलेक्टिव पॉइंट्स, वहां पे ये आपको बोन मिनरल डेंसिटी वहां की बताता है. ठीक है. सो पेशेंट्स लाई ऑन अ एग्जामिनेशन टेबल फॉर अप्रॉक्सीमेटली 5 minutes while examination is performed. इस पे ये डॉलर्स में कॉस्ट लिखा हुआ है स्क्रीनिंग टेस्ट का, लेकिन अगर हम इंडियन करेंसी के हिसाब से चलें तो 1000 से लेके 1500 तक इसका जो चार्जेस हैं वो होते हैं. ठीक है. देन डेक्सा स्कैन इंटरप्रिटेशन. तो ये कुछ स्कोर्स हैं बीएमडी के और टी स्कोर्स. ठीक है. अगर इन रेंजेस में होंगे तो जैसे फर्स्ट वाला जो नॉर्मल रेंज वैल्यूज हैं, फिर लो बोन मास वाली वैल्यूज हैं. लो बोन मास का मतलब है कि यू आर प्रोन टू गेट ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब यू आर ऑस्टियोपेनिक, यू आर इन द ऑस्टियोपेनिक कैटेगरी. देन कम्स ऑस्टियोपोरोसिस. ठीक है. और अगर वो बहुत ज्यादा स्वेयर और एस्टेब्लिश्ड ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है. देन एक क्वांटिटेटिव सीटी स्कैन भी यूज कर सकते हैं इसके लिए. ठीक है. वो इमेजिंग के लिए यूज होता है सीटी स्कैन. एक वर्टिब्रल फ्रैक्चर एक्सरे, जैसे ये आप देख रहे हो एक टिपिकल जो ये वाला एक्सरे, इसका मतलब ये ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर है ऑफ द वर्टिब्रा. देन स्टैंडर्ड लेबोरेटरी टेस्ट कौन कौन से यूज होते हैं. सीएमपी मीन्स क्रेटिनिन कैल्शियम एल्कलाइन फॉस्फेट.
ठीक है। तो क्रेटिनिन क्या करता है? एसएस फॉर रीनल फंक्शन फॉर चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। देन कैल्शियम इफ टू लो कंसिडर कॉज, क्योंकि कैल्शियम लो है, एंड रिप्लीट मतलब उसको रिप्लेनिश करो दोबारा से। इफ टू हाई कंसिडर हाइपर पैराथायराइडिज्म, जिसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा बॉडी से बाहर आता है, एक्सक्रीट होता है। देन एल्कलाइन फॉस्फेट, तो अगर ये आपको मिलता है तो ये ऑस्टियोमलेशिया डिटेक्ट करेगा। ठीक है। देन 25 OH विटामिन डी। ठीक है, 25 जो हाइड्रोक्सी आप टेस्ट कराते हो विटामिन, सो इम्पॉर्टेंट टू रिप्लीट इफ लो। विटामिन डी अगर आज की डेट में हम लोग अपना चेक कराएं तो मोस्टली हम लोगों का कम ही रहता है विटामिन डी। ठीक है। तो उसमें फिर आप उसको जैसे आपको पता है कि अगर बहुत ज्यादा लो हो तो इंजेक्शंस भी दे देते हैं लोग, अदरवाइज वो पाउचेस दे देते हैं पीने के लिए विटामिन डी के, या फिर एक जो टैबलेट्स आती हैं जिसमें 4 टैबलेट्स होती हैं, वीकली आपको एक खानी होती है, तो 6 6 मंथ्स बाद उसको रिपीट करना है। देन 24 आवर यूरिन कैल्शियम, हाइपर कैल्सियूरिया मतलब अगर ज्यादा कैल्शियम आ रहा है आपके यूरिन के अंदर। ठीक है। और अगर लो है, नॉर्मल वैल्यू से लो है, तो इट मीन्स देयर इज मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम। Then treatment. Treatment does not cure osteoporosis, but it can slow down the loss of bone and rebuild some bone. To maintain good bone health and prevent osteoporosis, one should eat a balanced diet that includes adequate calcium and vitamin D. Okay. Engage in regular physical activity. Refrain from smoking and avoid heavy alcohol use. It is important to consume enough calcium and vitamin D throughout your life in order to achieve maximal peak bone density in early and middle years to maintain bone in later years. अगर आज की डेट में अच्छा आपका बोन मास होगा तो लेटर ईयर में आप अगर जो लूज भी करोगे तो वो ऑस्टियोप्रोटिक होने के चांसेस कम हो जाएंगे बोन के। For most adults, a daily intake between 1200 to 1500 mg of calcium and 400 to 800 international unit of vitamin D is both safe and effective. If you have low bone density but not osteoporosis, आप इस सिचुएशन पे डिपेंड करता है, एंड ये डॉक्टर कैन रिकमेंड अ मेडिकेशन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर. Then weight bearing exercise such as walking or stair climbing also helps to keep your bones strong. Doing this kind of physical activity every day may help to stop further weakening of the bones. Then to maintain neutral calcium balance, 1000 mg per deciliter for premenopausal women and 1500 mg per deciliter for postmenopausal women. Then hormone replacement therapy may be used for short-term management of menopausal symptoms, but is generally not used for long-term prevention of fractures. थोड़ी देर के लिए hormone replacement therapy दी जा सकती है for short period of time. Then HRT reduces the chance of fracture and provides excellent relief from menopausal symptoms such as hot flashes, night sweats, and vaginal dryness. However, HRT increases the risk of deep vein thrombosis, मतलब blood clots in legs, and pulmonary embolus, blood clot in lungs. So estrogen combined with progestin slightly decrease the risk of colon cancer but increases the risk of coronary artery disease, stroke, and breast cancer. Estrogen alone without progestin increases the risk for stroke and for uterine cancer. तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है ऑब्वियसली बड़े एक्सट्रीम केसेस में ही दी जाती है, क्योंकि इसके जितने बेनिफिट्स हैं उतने नुकसान भी होते हैं. Then the risk of a broken bone resulting from osteoporosis increases with age. Once menopause begins, most women, especially Asian women, need to take precautions for the rest of their lives to prevent osteoporosis. Then preventive measures, you can reduce the risk of injury and a broken bone if you increase your activity level gradually but avoid unusually high impact sports. Then wear sportive shoes and low heels and non-slippery soles. Use support for walking such as cane if you need it. Maintain a safe, well-lit and uncluttered home which help to prevent falls. Avoid throw rugs on your floors at home. Obviously जितना आप slippery बना दोगे अपने घर को, there are more chances of having falls. Avoid icy, wet or slippery surfaces, especially in bathroom. Use non-skid mats in the shower and bathtub.
Then, principles and framework of exercise for osteoporosis. Understand and recognize immobility and the lack of loading as a risk factor either by itself or in combination with other factors. Understand the musculoskeletal adaptability to weight bearing, muscle contraction, and mechanical loading in the development of disuse osteopenia. Understand the value of remobilization, weight bearing, and physical activity, including resistance exercise, in prevention and treatment. So, weight bearing exercises for osteoporosis. These are the exercise which patient does on his feet so that his bones and muscles have to work against the gravity to keep him upright. Your bones react to weight on them by building themselves up and getting stronger. So there are two types of weight bearing exercises: high impact and low impact. So high impact include workouts like brisk walking, climbing stairs, dancing, hiking, jogging, jumping rope, step aerobics, tennis, and other racket sports, yard work like pushing, lawn mower, or heavy gardening. High impact weight bearing exercise may not be safe for patients who have higher chance of breaking a bone. ठीक है, अगर आपको पता है ऑलरेडी पेशेंट जो है ऑस्टियोपिनिया और ऑस्टियोप्रोसिस के बीच में ही कहीं है तो उसको हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस हम नहीं दे सकते. Therapists should know about the patient's workout routine. For such cases, recommend focus on low impact exercise that are less likely to cause fractures and still build up the bone density. तो low impact exercises कौन सी होंगी? Elliptical training machines, low impact aerobics, stair step machines, and walking. Then, if patient is new to exercise or haven't worked out for a while, therapist should aim to gradually increase the amount done until he get to 30 minutes of weight bearing exercise per day on most days of week. Then strengthen your muscles. Working on muscles matters just as much as building up bone. It can slow the bone loss that happens with osteoporosis and may help to prevent fall related fractures. क्योंकि मसल स्ट्रांग होंगे तो वो चीज़ बैलेंस करने में हेल्प करेगी तो फॉल के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे. These workouts can include basic moves such as standing and rising on your toes, lifting your own body weight with exercise like push-ups or squats, and using equipment such as elastic exercise bands, जो आप TheraBands use करते हैं, then free weights, then weight machines, then add strength training exercise to your workouts 2 to 3 days per week. Then non-impact exercises. These exercises don't directly strengthen your bones. They can though improve your coordination, flexibility, and muscle strength. That will lower the chance that you will fall and break a bone. So these can be done every day. Balance exercises such as Tai Chi can strengthen your leg muscles and help you to stay steadier on your feet. Posture exercises can help you to work against the sloping shoulders that can happen with osteoporosis and lower your chance of spine fractures. Then routines such as yoga and Pilates, they can improve strength, balance, and flexibility in people with osteoporosis. But some of the moves done in these programs, including forward bending exercise, can make patient more likely to get a fracture. So you should be careful कि वो इस तरह की movements ना आप कराओ जिनमें there are chances of fracture जो ज़्यादा high impact है. If interested in these workouts, talk with your doctor and ask your physical therapist to tell the moves that are safe and those should avoid it. देन जो मतलब सेफ मूव्स हैं वही आप अपने पेशेंट को बताओ. Then exercise can benefit almost everyone with osteoporosis, but remember, it is only one part of a good treatment plan. Then the importance of exercise in overcoming inactivity-induced osteopenia should not be overlooked. Disuse osteoporosis can be minimized by the regular use of isometric and isotonic exercises. Okay, so ambulation or at least standing on a tilt table. Tilt table पे भी आप अगर खड़े हो जाते हो तो थोड़ा weight bearing body का होता है. Or in a standing frame may retard the loss of calcium. Additionally, in the elderly, the exercise targeted at strengthening limb girdle muscles and lessening the chance of falls is an important adjunct.
Then resistance exercises for osteoporosis. There is a great deal of evidence that resistive exercise can increase bone mass. Studies have demonstrated that there is a significant correlation between muscle strength and bone mineral density. For example, the strength of paraspinal muscles correlates with mineral density of the lumbar spine. Reduced back extensor muscle strength is associated with higher incidence of vertebral fractures, thus suggesting that immobility plays an important role in development of osteoporosis in women. So, low mineral density of the spine can be improved with back extensor exercise. Progressive resisted strengthening exercise training for back extensors, hip extensors, and abductors and shoulder girdle muscles. Then postural training and ambulation. Avoidance of flexion exercise of lumbar spine or high impact exercises like jogging and step aerobics, especially when vertebral fractures or advanced osteoporosis is suspected. Then comes low back pain. सो बोन्स एंड जॉइंट्स ऑफ द पेल्विस ये थोड़ा सा ऐसे बेसिक वो है आर्टिकुलेशन है कि द टू हिप बोन्स जिनको हम इननॉमिनेट बोन्स भी बोलते हैं मीट टुगेदर मिड लाइन एंटीरियरली फॉर्मिंग अ सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड विद द sacrum posteriorly to form sacroiliac joints. This bony ring forms a cavity through which the fetus passes during the delivery. Then the pelvic outlet at the base of the pelvis comprises of tip of the coccyx posteriorly, ischial spines and tuberosities laterally, and the pubic arch anteriorly. Okay. The shape of the female true pelvis is such that it allows the passage of fetus during the process of birth, and this is the process of the birth of a fetus. So इसमें कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं? द एब्डोमिनल मसल्स, रेक्टस एब्डोमिनस, internal and external oblique muscles, then transverse abdominis, then pelvic floor muscles. So musculoskeletal changes during pregnancy. Postural changes with weight gain, increased blood volume and ventral growth of the fetus. The center of the gravity no longer falls over the feet and the women may need to lean backward to gain equilibrium. So disorganization of spinal curves result in adaptive posture include an increase of a lumbosacral angle and an increase of lumbar lordosis or anterior displacement of the pelvis. So there will be compensatory posterior displacement of the shoulders and thoracic spine and increase of the cervical lordosis. आपको पता है एक जगह कभी पोस्चर या अलाइनमेंट खराब होती है तो वहां पे फिर उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरी जगह भी बॉडी में जो पोस्चर है वो ऑल्टर होना शुरू हो जाता है. Then articular and connective tissue changes, altered level of relaxin, estrogen and progesterone during the pregnancy result in an alteration of collagen metabolism and increased connective tissue pliability and extensibility. Ligaments lax होनी शुरू हो जाती हैं. Ligamentous tissue are predisposed to laxity with resultant reduced joint stability. So the symphysis pubis and sacroiliac joints are particularly affected to allow the birth of the baby. This ligamentous laxity may continue for 6 months after postpartum. So causes of low back pain, gynecological causes, organic causes में positional abnormalities of the uterus, ठीक है, then uterine descent or prolapse, abnormalities of tissue supporting the uterus, then indefinite complaints caused by the autonomic disorders. So orthopedic causes में intervertebral disc hernia, spondylolisthesis, spondylolisthesis, then lumbar spinal canal stenosis, osteoporosis, coccygeal fractures, spinal metastasis from cancer. The neurological causes inflammation जैसे polynephritis, renal pelvic tumors, calculi, urinary tract obstruction. Then psychiatric and neurological causes depression, psychosomatic disease, hypochondria, neurosis. Internal and surgical causes appendicitis, myalgia, neuralgia, rheumatism. Then principles of treatment of low back pain. So आपके principles क्या होने चाहिए? Relieve pain in acute cases, restore normal movements in chronic cases, and reoccurrence is to be prevented. ओके एक्यूट केस में हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रीजन रहता है ट्रीटमेंट का वो रहता है रिलीव द पेन.
ठीक है, उस टाइम पे हम कुछ भी एक्सरसाइज या कुछ भी अलाउ नहीं करते जब तक पेशेंट ये नहीं कहता कि पेन पहले से रिलीव हुआ है। अगर क्रॉनिक केसेस हैं तो उसमें ऑब्वियसली क्योंकि डिसयूज एट्रोफी हो गई होगी बहुत, इसलिए फिर आप उसको रिस्टोर करो, नॉर्मल मूवमेंट को, मसल पावर और जॉइंट रेंज ऑफ मोशन जो है उसको इम्प्रूव करो। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है कि अगर मेंटेन नहीं करेगा पेशेंट तो रीअकरेंस होने के भी चांसेस हैं। तो थर्ड प्रिंसिपल बन जाता है कि रीअकरेंस को प्रिवेंट करना है आपने। सो मैनेजमेंट, जब बहुत ज़्यादा एक्यूट फेज में होता है लो बैक पेन, तो उसमें सेमी फॉलोअर पोजीशन में हम बेड रेस्ट के लिए बोलेंगे। ठीक है, बोथ हिप्स एंड नीज आर फ्लेक्स्ड एज इट रिलीव्स द स्ट्रेस ऑन द बैक. Supine lying with pillows beneath the knees, then side lying with hip and knee flexed. Then physical agents क्या यूज कर सकते हो आप? When combined with exercises gives very effective result. तो acute phase जब होता है इनिशियल वाला, तो उसमें we can prefer cold packs. ठीक है, if there is any acute cause of low back pain, then we can use moist heat wrapped in two towels and placed on the patient's back for 20 to 30 minutes. Then you can go for ultrasound both in acute and chronic condition, but preferentially in chronic condition. ठीक है, आपको पता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में आपके पास दोनों मोड्स अवेलेबल हैं, आप एक्यूट फेज को भी ट्रीट कर सकते हो। देन टेंस फॉर बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक पेन्स। ठीक है, ये कुछ वो हैं कि आप किस मोड पे उनको लगा सकते हो, बट इट ऑलवेज डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा वाला मोड यूज करना चाहते हो। जो आजकल नई मशीन्स हैं उसके अंदर तो आप अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ये सारे मोड्स जो हैं वो ऑलरेडी सेट हैं। देन फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस की कॉन्ट्रा इंडिकेशन, एक्यूट डिस्क प्रोलैप्स। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड रेस्ट, पोस्चरल लो बैक एक ड्यू टू फ्लेक्शन एंड लेटरल ट्रंक शिफ्ट। ठीक है, ये सारी जो हैं ये दीज आर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस फॉर फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस. So these are some exercises, strengthening and stretching exercises. So as you can see, there is pelvic tilt, then you can see the knee to chest, okay, then head raising, okay, then leg raising, then curl ups. बाकी एज यू नो कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिसमें ये कुछ एक्सरसाइजेस जो हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। जैसे लिस्थेसिस अगर हुआ हो तो जो स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस हैं दे आर हाईली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. देन एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस एम्स क्या है? टू मेंटेन नॉर्मल लंबर लॉर्डोसिस, टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटेंसर मसल्स ऑफ बैक एंड हिप, टू इम्प्रूव मोबिलिटी ऑफ द स्पाइन. ठीक है, एंड व्हाट आर कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस? स्पाइनल स्टेनोसिस, spondylolisthesis, acute disc prolapse, and multiple back operations. Then sacroiliac, pelvic girdle pain. So exercise modification क्या है इसके अंदर? Teach patient to activate the pelvic floor and transverse abdominals when transition from one position to another and lifting in order to stabilize the pelvis. Then external stabilization, use of belts and corsets designed for use during pregnancy, which helps to reduce posterior pelvic pain, especially when walking. Then अगर varicose veins हैं तो exercise modification, if there is discomfort, exercises may need to be that minimal dependent position of legs occur. तो आप ज़्यादा डिपेंडेंट पोजीशन में एक्सरसाइज ना करवाओ. देन एक्सटर्नल सपोर्ट में आप क्या कर सकते हो? इलास्टिक सपोर्ट स्टॉकिंग्स शुड बी worn to provide an external pressure gradient against the distended veins. Women should be encouraged to perform lower extremity exercise and to elevate the lower extremities as often as possible. वेरिकोज वेन्स में आपने ये ध्यान जरूर रखना है कि अगर बहुत प्रोलॉन्ग टाइम से बंदा बेड रिडन है, लेग्स में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, ठीक है, अगर कोई वहां पे थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन हुई है और आप सडनली जाके विग्रस एक्सरसाइजेस करवा देते हो तो दैट थ्रोम्बस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एम्बुलस एनी टाइम. ठीक है, सो यू ऑलवेज स्टार्ट विद स्टेडी एक्सरसाइज. देन डायनामिक ट्रंक एक्सरसाइजेस, इसमें pelvic motion training, pelvic tilt exercise, pelvic lock, pelvic curls, pelvic lock progression, then trunk curls, then modified upper and lower extremity strengthening, standing push-ups हो गए, spine bridging हो गई,
क्वाड्रुपेड लेग रेजिंग हो गई, मॉडिफाइड स्क्वाटिंग हो गई, स्कैपुलर रिट्रैक्शन हो गई. Then third condition is anemia in pregnancy. So anemia is very common in pregnancy. There are many other causes also. Anemia is the commonest hematological disorder that may occur in pregnancy. It is a reduction in the oxygen carrying capacity of blood, which may be due to a reduced number of red blood cells, a low concentration of hemoglobin, or a combination of both. So classification of anemia, एक physiological anemia है. Then comes pathological anemia. Pathological anemia जो है, physiological anemia is due to any physiological changes in the body. और pathological में iron deficiency, folic acid deficiency, vitamin B deficiency, protein deficiency. Then hemorrhagic anemia, acute following bleeding in early months of pregnancy or APH. Then chronic hookworm infestation, bleeding piles. ये हेमरेजिक रीजन है एनीमिया के. देन हिमोलिटिक एनीमिया. हिमोलिटिक एनीमिया में फैमिलियल भी हो सकता है और अक्वायर्ड भी हो सकता है. फैमिलियल में कंजेनिटल और सिकल सेल एनीमिया हो गया जैसे, और अक्वायर्ड में मलेरिया और स्वीयर इन्फेक्शन. Then bone marrow insufficiency, hypoplasia or aplasia due to radiation, drugs, or severe infection. Then hemoglobinopathies. Iron deficiency anemia. About 95% of pregnant women with anemia have the iron deficiency type. A pregnant woman is said to be anemic if her hemoglobin is less than 10 grams percent. और नॉर्मली फीमेल्स में जो ये अनीमिया मतलब जो हीमोग्लोबिन का फॉल है वो होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पेशली सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर, व्हेन द गायनेकोलॉजिस्ट स्टार्ट्स विद द रिप्लेसमेंट लाइक सप्लीमेंटेशन. Then causes reduced intake and absorption of iron. This includes dietary deficiency and GI disturbances such as morning sickness. ठीक है, बिकॉज इसमें मॉर्निंग सिकनेस और नोजिया की बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से फीमेल इज नॉट एबल टू ईट मोर. Then excess demand such as multiple pregnancy, chronic inflammation particularly of urinary tract. और अगर मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं तो उसमें भी जो फीमेल है वो एनीमिक हो जाती है. देन डिक्रीज्ड अब्जॉर्प्शन ड्यू टू डिक्रीज्ड गैस्ट्रिक एसिडिटी एंड डाइटरी इम्बैलेंस. Signs and symptoms: pallor of mucous membranes, lassitude and feeling of weakness, giddiness, tachycardia and palpitations, dyspnea, anorexia and indigestion, and swelling of legs. Then effects of anemia on mother: reduced resistance to infection caused by impaired cell mediated immunity, reduced ability to withstand postpartum hemorrhage. अगर ऑलरेडी अनीमिक है, वो जो पोस्टपार्टम हेमरेज होगा उसमें तो ऑब्वियसली अनीमिया और बढ़ता है क्योंकि ब्लड लॉस होता है उसके अंदर. अगर एपिजियोटमी भी होती है उसमें भी ब्लड लॉस होता है. अदरवाइज ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द फीटस भी ब्लड लॉस होता है. देन इफेक्ट्स ऑफ एनीमिया ऑन द फीटस. फीटस पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे? इंक्रीज रिस्क ऑफ इंट्रायूट्राइन हाइपोक्सिया एंड ग्रोथ रिटार्डेशन, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अगर ब्लड की कम हो जाएगी तो हाइपोक्सिया होने के चांसेस हो जाएंगे. प्री मेच्योरिटी. देन लो बर्थ वेट. देन अनीमिया फ्यू मंथ्स लेटर बर्थ ड्यू टू पुअर स्टोर्स, बच्चा अनीमिक हो जाएगा बाद में. देन इंक्रीज रिस्क ऑफ पेरीनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी. So management in the tropics, majority of cases with anemia and pregnancy have a low socio-economic status. So prophylaxis क्या है इसके लिए? Avoidance of frequent childbirths. A minimum interval between the pregnancies should be at least 2 years to replenish the iron lost during the childbirth and lactation. क्योंकि lactation के time पे भी female anemic होती है. Then supplementary iron therapy. Daily administration of 200 mg of ferrous sulfate along with 1 mg of folic acid is quite effective prophylactic procedure. Dietary advice: a balanced diet rich in iron and protein, which is affordable by the women and easily digestible, should be recommended. Adequate treatments to eradicate illness likely to cause anemia. These are hookworm infestation, dysentery, bleeding piles, malaria, and urinary tract infections. Then early detection of falling hemoglobin level. Hemoglobin level should be estimated at the first
एंटीनेटल विजिट एट 28th एंड फाइनली 36th वीक। ठीक है, पहले तो जो फर्स्ट विजिट है उसमें भी चेक होना चाहिए हीमोग्लोबिन, देन 28th एंड देन 38th वीक। Then curative management. Women having hemoglobin level of 7.5 mg% and those with associated obstetrical medical complications even with moderate degree of anemia should be hospitalized. Following therapeutic measures are to be instituted: diet, a balanced diet which is rich in protein, iron and vitamins, appropriate antibiotic therapy to eradicate even a minimal septic focus, effective therapy to cure the disease contributing to the cause of anemia, iron therapy to raise the hemoglobin levels to restore the iron reverse at least in part if possible before the woman goes into labor. This may be oral iron or parenteral iron depending on the severity of anemia, duration of pregnancy and associated complicating factors. Thank you. So now you can have a conversation with me. Apurva, if you wish, you can ask, ma'am. Okay, Apurva, can you hear me? Because you can hear me, है ना, right? Actually, hormone replacement therapy जो होती है अपूर्वा, वो बहुत extreme cases में दी जाती है, ठीक है? But it is not given simultaneously. As you know, जो हम कैल्शियम भी देते हैं ओल्ड एज में, वो भी हमारी बॉडी में बहुत कम परसेंटेज में एब्जॉर्ब होता है। उसका काफी सारा अमाउंट जो है वो तो वॉश आउट ही होता है थ्रू किडनी, ठीक है ना। तभी ऑस्टियोपोरोसिस का एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के अपने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। तो वो हम, क्योंकि हार्मोन क्या है, स्टीरॉयड है, और स्टीरॉयड हमारी लास्ट चॉइस होता है, क्योंकि जब हमें ये होता है कि हमें टेम्पररी रिलीफ देना है बंदे को, लेकिन बदले में जितना भी डैमेज होगा वी आर रेडी टू एक्सेप्ट, ठीक है। लेकिन अगर अगर वो हमें इतनी जरूरत नहीं है तो एचआरटी का तो ज्यादा मतलब है ही नहीं, बिकॉज उसने उस टाइम पे हमें टेम्परेरी रिलीफ तो देना है, लेकिन उसके बाद उसने हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस दे के जाना है विच आर नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। सो अदर नॉर्मली जो हम ऑस्टियोपोरोटिक लोगों के लिए करते हैं वो सिर्फ यही करते हैं कि उनके जो फॉल्स हैं प्रिवेंट हो जाएं,
ठीक है, जितना हो सके वो एक्सरसाइज करें, क्योंकि देखो जितना बोन मास लूज कर गए वो तो वो कर गए, लेकिन हम चाहते हैं फर्दर ना करें, फर्दर ना करें, क्योंकि जितने फर्दर बोन मास लूज करते जाएंगे उतने दे वुड बी मोर ससेप्टेबल टू फ्रैक्चर, राइट। तो उसके आगे हम प्रिवेंशन स्टार्ट करेंगे। ओके, आर यू सेटिस्फाइड? ओके ओके, एनीथिंग एल्स? Okay, okay. Take care, Apurva and Hina. So now we will meet for next lecture, next Wednesday, right? Okay. Take care and stay safe.